time round, he learned from his two previous mistakes and took the bread out just in time, and that's how Indians were created. The books were written by a prominent RSS member and ideologue, Dinanath Batra. Since the BJP was elected, Batra has been appointed to a committee making recommendations on the country's new education policy. Mughals or Mohammedans, a sword in one hand and the Quran in another, they try to convert Hindus into Muslims. But Christians did not use the sword. They used education. In our history books, there are no points to be proud of. So our glorious chapters are diminished and they are not in sight. So I want self-realization of the whole country and whole education. Do you think each and every textbook being used in Indian schools today should be rewritten? Yes. Prime Minister Modi has repeatedly tried to distance himself from the more radical elements within the Hindu movement. He has also tried to crack down on his colleagues in parliament who have become controversial for their views. मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। But it's easier said than done. Some politicians, like Sakshi Maharaj, appear to have built their entire careers around inciting religious disharmony. A lifelong RSS member and self-styled holy man, Maharaj is a hugely influential parliamentarian. He has been at the center of a political storm almost since the beginning of the Modi administration for his vehemently sectarian views. मुझे लगता है कि जो इस राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। रास्ता खुला हुआ, पाकिस्तान जा सकते हैं। But Maharaj doesn't see his words as controversial. मैं तो एक संत हूँ, भगवा मेरे वस्त्र हैं, सारे विश्व को शांति का संदेश हिंदुस्तान ने दिया। अगर कोई व्यक्ति मेरी बात की बोली लगाता है, मुझे गलत कहता है, तो मैं खुदा से डरता हूँ, इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं सच्चे रास्ते पर हूँ, मैंने गलत कहा ही नहीं। His party might disagree. The BJP recently put him on notice for making statements that incite hatred. At a rally later that afternoon, he chooses instead to speak of Islamic terrorism. अब तो मुस्लिम कंट्री दुबई की छाती पर खड़े होके नरेंद्र भाई मोदी ने सारे विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया। मोदी जी ने कहा एक वो लोग होंगे जो मानवता के पोषक होंगे, जो मानवतावादी होंगे, जो मानवता के रक्षक होंगे, एक वो होंगे आतंकवादी होंगे, आतंकवाद का संरक्षण देने वाले होंगे। इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और आतंकवादी मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। वंदे वंदे। Maharaj makes no bones about his view that terrorism stems from the Muslim community. A message that also resonates within these walls where a very special camp is underway. It's barely dawn, but here in Bareilly, a small town in Uttar Pradesh, the day has already begun. First, it's time for the traditional Hindu prayer. Over the next 7 days, these girls will be fed a steady diet of Hindu values and inculcated with military-style discipline. So we're at the Durga Vahini camp for young Hindu girls. Literally translated, it means the army of Durga. Durga is one of the fiercest goddesses in Hindu mythology. Now this camp is open to girls between the ages of 15 to 35. After months of negotiations, we were finally given access to film here in June. It's one of many similar Hindu nationalist summer camps for girls to take place across India. Formed in 1991 with the purpose of empowering Hindu women and transforming them into warriors,
The Durga Vahini, like their Bajrang Dal brothers, are also considered a militant wing of the RSS. Some of its followers have come under scrutiny from India's security forces. In 2008, one of the group's leaders, Sadhvi Pragya, was arrested and charged for her alleged role in orchestrating a terror attack on a Muslim-majority town in the western state of Maharashtra. करो क्लिक इमेजिन कर लो कोई भी चीज़ें सोच लो जिस पे आप निशाना ले रहे हो हमें हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदूवादी लोग चाहिए जो राष्ट्र प्रेमी हो अपने राष्ट्र से प्यार करें और प्राय अभी तक यही देखा गया है कि जिस देश में ये बाहुल्य हुए हैं इनकी संख्या ज़्यादा हुई है वहाँ इन्होंने दूसरे धर्म को रहने नहीं दिया। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए। तो ऐसे में इसलिए हमें आत्मरक्षा और अपने आप को इतना सक्षम बनाना होगा कि हम किसी भी मुसीबत से आगे लड़ सकें। तो आप तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, हम उन्हें तैयार कर रहे हैं उस चीज़ की। आने वाले समय के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चाहूँगा कि ये लड़ें उनसे। Over the next few days, the girls will hear many versions of that message. A message that with time becomes deeply rooted in their psyche. Most of these girls will be married in a few years. And Durga Vahini is determined to teach them what to keep in mind when the time comes. पर जैसे आप ये कैंप को किस नज़रिए से देखते हैं? ये हिंदू संगठन से, मतलब हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, हिंदुओं की लड़कियों ने एक साथ रहना चाहिए, मतलब वो सब। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल तुम्हें पता ही है मोमेंट्स कितना मतलब वो कर रहे हैं, कोई भी हो, मतलब ऐसे मोमेंट्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ऐसे उनके भी तो अपने संगठन होते हैं, तो हमारा भी होना चाहिए। और वो मतलब कोई ISI संगठन सुना होगा आपने, वहाँ से पैसा आता है उनके लिए, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए। पता है, 1 घर और 1 लाख रुपए पता नहीं ऐसे कुछ मिलता है। और उसके बाद वो मतलब उससे फिर वो पता है करते क्या है, मतलब शादी की तो उसके बाद बच्चे पैदा किए, उसके बाद तलाक दे देते हैं, या फिर मतलब उसे मतलब ऐसे ही रखते हैं शोषण करने के लिए, मतलब उसका टॉर्चर करते हैं उसे, बेच भी देते हैं अरब देशों में, और बहुत मतलब वो करते हैं। आपको भी ये सब कैसे पता चला? हमें दुर्गा वाहिनी से ही पता चला। Their words echo the beliefs of the men who are shaping their minds. Speaking to the girls today is Ishwari Prasad, a local leader with the right-wing Hindu group, the Vishwa Hindu Parishad. हिंदू की संख्या कम की जा रही है। बोलो भाई, किसी हिंदू को मुसलमान के साथ शादी करना या ईसाई के साथ शादी करना ठीक है, गलत है? अगर जानवर खत्म हो जाए, जानवरों का मांस ना मिले, सब्जी ना मिले, रोटी ना हो, तो इस्लाम धर्म के अंदर महिला को भी काट करके खाना धर्म में माना जाता है। हमारे धर्म में ऐसा है क्या? हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारा धर्म महान है। Barely out of their teens, these young girls have already bought into Durga Vahini's ideology of Hindu supremacy. An ideology that remains disturbing for the majority of Indians. But I think the bigger issue is that there are a large majority of people within the majority community who do actually see India as a democratic, secular polity. And they do wish to see different groups really coexisting peacefully in harmony. So I think some of the ideas they stand for may not really be even accepted by the majority community. So the society, I hope, will be able to put some checks. For many Indians, the aggressive beliefs of the Hindu nationalist movement go against everything this country stands for. Moderate voices will need to be raised over the coming years if my country is to remain true to its secular spirit. Otherwise, our founding father Mahatma Gandhi's vision of an independent India based on religious pluralism could be derailed by the whims of an intolerant few.